become less intense or widespread. Everett, come hona ya Ganjana. A place where animals are slaughtered for consumption as food, abattoir, the side the superior of a monastery, about Pramukh, to reduce to a shorter form intended to stand for the whole abbreviation, संक्षिप्त रूप में, to give up one's authority or throne, abdicate, अपना पद छोड़ देना, act of giving up, renouncing the throne, throne, abdication, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना, deviation from the right course, aberration, असमानता, the act of washing oneself, ablution, हाथ या शरीर को धोना साफ करना, to refuse or deny oneself, negate, they have formally put an end to a system, practice or institution, abolition, existing existing in a land from the earliest times or from before the arrival of colonists, aboriginal, the original inhabitants, native of a country, aborigine, to shorten, to shorten a piece of writing without losing the sense, a abridge, a shortened version of a large work, abridgment, can say or do away with a law or agreement, abrogate, to go, to go away suddenly and secretly in order to escape from somewhere, abscond, formal forgiveness of a person's sins, absolution, widely unreasonable, illogical, or ridiculous, absurd, to increase the speed, accelerate, any award, honor, or laudatory notice, accolade, a person who helps another to commit crime or to do something morally wrong, a partner in crime, accomplish, be harmonious or consistent with accord, a person whose profession is to keep accounts, accountant, sharp, bitter, or harsh in temper language, etc., acerbic, the scientific study of sound, acoustic, to decide the to decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime, acquit, an entertainer who performs difficult physical feats, acrobat, हवाई करता करने वाला, an abbreviation formed from the initial letter of other words and pronounced as a word, acronyms, fear of great height, acrophobia, to do something, to have in particular way, to perform a part in a play, film, function, act, giving cause for legal action, actionable, make a machine active or operative, activate, the ability to make good judgment and take quick decision, sharpness and accuracy of judgment, acumen, kushagra buddhi, a person who is physically dependent on a sustained substances, harmful drug, addict, naturally, believe in and follow the practice of adhere, the period between the beginning of puberty and adulthood, adolescence, an extremely beautiful young man, Adonis, very attractive and easy to feel love for, adorable, make impure by adding inferior substances, adulterate, willing to take risks and try new ideas, adventurous, a person who supports or speaks in favor of something, advocate, growing, existing, living here, aerial, concerned with beauty or the or the appreciation of beauty, aesthetic, a list of items to be discussed at a meeting, agenda, to increase the importance, position or wealth, aggrandize, always ready to attack or quarrel, one who is hostile and violent, aggressive, one who is not sure about God's existence, agnostic, extreme mental or physical suffering, agony, a blank book for keeping a collection of photographs, stamps or pictures, album, study of chemistry in a medieval fashion, alchemy, a substance for killing, algicide, fear of pain, algophobia, a person belonging to a foreign country, different from what you are used to, a fictional being from another world, alien, Jadoo, the money paid to former wife, husband, or partner when the marriage is ended, alimony, alimony, a story play picture, etc., in which character event is a symbol to represent an idea, a quality such as truth, evil, death, etc. Allegory, word that begin with the same letter, syllable, or sound. Repetition of an initial sound is two or more words of a line. Alliteration, soil deposited by flowing water, alluvial. Alluvium, the school or college in which one has been educated. Mater, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था, alma mater. A publication containing astronomical or meteorological annual calendar that contains important dates and time. Almanac, mountain climbing. Alpinism, a table or flat surface where offerings are made to a diving altar. Instrument that measures altitude of the land surface. Altimeter. The height above the height above sea level. Altitude. Someone who makes charitable donation intended to the welfare of other people. Altruist. Altruist. A former student of a school, college, or university. Alumnus. One who plays for pleasure rather than as a profession. A person who is neither well experienced nor professional. A non-professional who is inept at a particular activity. Amateur. Fear of riding in a car. Amexophobia. A diplomatic representative in another country. Ambassador. Able to use the left hand and right hand equally well. Ambidextrous. The character and atmosphere of a place. Ambience. Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. Ambiguous. Having or showing both good and bad feeling. Ambivalent. One who has the qualities like shyness and openness at the same time. Ambivert. Walk or move at a slow, relaxed pace to work aimlessly. Amble. Make.
make something bad or unsatisfactory better. Ameliorate बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार करना. Readily reacting to suggestions and influences, willing to be guided or controlled. Amenable आज्ञाकारी. Someone who is friendly and good natured. Amicable in a friendly and peaceable manner. Amicably. A partial or total loss of memory. Amnesia. An official pardon, the formal act of liberating someone. Amnesty. Not following any moral rules and make caring about right or wrong. Amoral. Animal that can live both on land and in water. Amphibians. Amphibians. A person who has had one or more limbs removed. And beauty. Apanga. A word or a phrase formed by rearranging a different word. Anagram. शब्द बदलकर करना नया शब्द बनाना. Okay. शब्द बदलकर नया शब्द बनाना. A similarity between like features of two things on which a comparison may be based. Analogy. समानता. Detailed examination of something complex. Analysis. A person who believes that law and government are not necessary. A person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness. Anarchist. Anarchist or anarchist. A situation in a country and organization, etc., in which there is no government order control. Anarchy. The branch of science concerned with the bodily structure of human anatomy, of human animal and other living organism is anatomy. A person who presents a radio television program anchor belonging to long past and ancient. A short, interesting or amusing story about a real person or an event. Anecdote. A medical specialist who administers drug for relieving pain during surgery. Anesthetist. Like a weak old woman and naive. A strong dislike hostility. Animosity. To, to destroy completely. Annihilate the date on which an event happened in some previous year anniversary. A fixed sum paid annually. Annuity. Departure from common rule. Anomaly. Whose name are not known. An unknown author. Anonymous. Obsessive desire to lose weight by refusing to eat. Anorexia. वजन कम करने के लिए भोजन त्याग की इच्छा. A collection of poem, story, etc. That have been written by different people and published together in a book. Anthology. One who studies the evolution of mankind. Anthropologist. The study of human race, especially of its origin, development, custom, and beliefs. Anthropology. Look forward to, anticipate, medicine to nullify the effect of poison or other medicine, another medicine, antidotes. Strong dislike between two persons, a deep-seated feeling of aversion, antipathy. One who studies the antique things, antiquarian, the act opposite, antithesis, exact opposite. Words which are positive in meaning, antonyms. Policy that segregates people on the basis of race, policy of racial discrimination. Apartheid. A set of rooms forming on residence in a building. Apartment. Showing or feeling no interest, enthusiasm, or concern. Apathetic. The feeling of not being interested in or enthusiastic. Apathy. Loss of speech due to medical problem. Emphasia. A place where these are kept appear to express regret for something that one has done wrong. Apologize. Ancient history. History of introduction. The origin of the origin of the history is associated with the Greek word historia, which means information or an inquiry designed to elicit truth. According to history is the record of what one age find worthy of noting another. According to Henry, history is its broadest sense in everything that ever happened. NCRT defined history is a scientific study of past happening in all their aspects in the life of a social group, in the light of present event. According to C.R.C. Collingwood, 1945, history is or should be an attempt to rethink the past. Hence, the study of history helps study students understand and analyze the present by tracing its roots in the past. It highlights cause and effect links and offers insight into current national and global issues with clarity and objectivity. Calendar, also known as founder origin year calendar type year length, key feature for users. Vikram Samvat, Hindu lunisolar calendar. Chandragupta Vikramaditya Yuddha, 57 BC, lunisolar 354 days. Starts mid-April, used in most of the Nepal except West Bengal. Saka Samvat, Indian national calendar. King Shalivahana, 78 AD, solar 365 days. Official calendar of India, adopted on March 2020. 19, March 22, 1957 by the Calendar Reforms Committee. Hijri calendar, Islamic lunar calendar. Prophet Muhammad 622 AD lunar 354 or 355 days used to determine Islamic event like Ramadan and Hajj 11 days earlier each year. Gregorian calendar, Christian calendar, Pope Gregory 13, 1582 AD, solar 365 days 5 hours 48 minutes 46 seconds. Civil calendar worldwide starts January 1, corrected Julian calendars with their flaw. Indian national calendar. The Indian national calendar is based on a Saka calendar and is used alongside the Gregorian calendar for official civil purposes. It was officially adopted as Indian national calendar on March 22, 1957 by the Calendar Reform Committee chaired by M. Saha. It operates alongside the Gregorian calendar for government publication including the Gazette of India and All India Radio.
It consists of 12 months or 365 days, mirroring the Gregorian structure. The first month, Chaitra begins or March 2020, March 22, except in Gregorian leap year when it starts on March 21. It follows a structure very close to the Gregorian calendar, making it easily usable. The Saka calendar is used in Bali and Java, especially among Hindus for culture and religious observances. The Gazette of India publishes date in both the Saka and Gregorian calendars. System of dating. System of dating. BC and AC features BC before Christ, AD Anno Domini. Full form BC before Christ, AD Anno Domini. Latin word in the year of our Lord. Time period. Time period refers to year before the birth of Jesus Christ. Refers to year after the birth of Jesus Christ. Year counting direction. Year count backward. Example 500 BC, 100 BC. Year count forward. Example 180 to 2024 AD. After starting point ends in the 1 BC begins from the year 180. Used for ancient historical event. Used for modern historical event. Note BC and CE stand for before common era and are alternative to BC and AD respectively. The traditional saga is luni. The traditional saga is lunisolar, whereas the national version is based on solar calculation. Month name is in calendar include Chaitra, Vaishakha, Jyeshtha, Ashadha, Shravana, Bhadra, Ashwin, Kartika, Arabhana, Margashirsha, Pushpa, Pausha, Magha, and Falguna. The month cycle usually has 30 days, but in leap year it has 31 days. Months like Vaishakha, Jyeshtha, Shravana, and Bhadra typically have 31 days based on the Earth's elliptical orbit around the Sun. It is a historical sources of ancient India. India has a vast and diverse culture, heritage, and its ancient history is both rich and complex. The reconstruction of ancient India's historical sources can broadly be categorized into two major categories: literary source and archaeological source. Each category sheds light on a unique facet of Indian civilization and help in creating a comprehensive understanding of ancient India. Literary source. The history of ancient India is primarily reconstructed from a variety of sources, among which literary sources hold a significant position. These sources not only provide chronological narratives and genealogical record, but also offered insights into the socio-political, economic, religious, and cultural fabric of ancient Indian civilization. Literary sources are broadly classified into two subcategories: indigenous texts and foreign texts. The indigenous text. This includes religious scripture, epics, non-religious literature, plays, pure poetry, and scientific treatises. They were primarily rights written in Sanskrit, Pali, Prakrit, Tamil, and other regional languages, and served as the ideological and cultural bedrock of Indian religion literature. Religious text offers profound insights into spiritual life, social structures, political authority, and cultural practices. This includes Hindu texts, the Vedas, 1500 to 500 BC. Composed in Sanskrit, these texts form the foundation of Hindu philosophy, rituals, and societal structure. Comprise Rigveda, Samveda, Yajurveda, and Atharvaveda. Contain hymns, chants, rituals, and philosophical discourses. Provide invaluable knowledge about Vedic society, including the Varna system, family structure, and agrarian economy. The Upanishad, philosophical extension of the Vedas, explores metaphysical concepts such as Brahman, Atman, Karma, Dharma, and Moksha. Estimated compositions. RCBC, those written in Sanskrit, both prose and verse, associated with the later Vedic period, representing a transition from ritualistic practices to spiritual introspections. The Brahmanas and Aryanas. Supplementary texts associated with the Vedas detail ritualistic and ceremonial practices. Aryanas serve as meditative guides for forest dwellers. The Puranas. It comprises 18 major Mahapuranas and many minor Upapuranas texts, include cosmogony, genealogies of god, heroes, sages, and kings, blend mythology with elements of historical and religious tradition. Most Puranas were composed between 300 to 1000 AD. Include Buddhist literature, Pali Canon or Tripitaka. Includes Vinaya Pitaka, monastic history, Sutta Pitaka, Buddha's sermons, and Abhidhamma Pitaka. Philosophical analysis reveal detail about society, ethics, monastic life, and administration during the Maurya and post-Maurya periods. Jain literature, Agamas, composed in Prakrit and Arthamagad, and encompass teaching of Tirthankara's, particularly Mahavira. Highlight the importance of doctrine of non-violence, karma, and and renunciation. शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की तारीख को लिखी है 30 बताओ दिसंबर एंड है ना तो आज सोचा जितना भी पॉइंट टाइम से वो हम कवर करेंगे यहाँ पर और जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि जो रिवीजन का सेक्शन हम कभी कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल एंड है ना तो नंबर से कोई रह गया होगा 5 नंबर से रह गया होगा तो 40 नंबर से रह गया होगा लेकिन हम साल को लेके हम बैठे हो तो नहीं सकते सबके अपने अलग रिजोल्यूशन होते हैं तो रिजोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है तो बस ये सोचना है कि सेक्शन कैसे भी आपको सेक्शन लेना है चाहे किसी भी चीज का त्याग करना पड़े शादी आती है बर्थडे पार्टीज है इधर जाना है घूमना फिरना है एक्सप्लोर किया है व्हाटएवर या आपको देखिए सेक्शन कश्मीर का भी देखिए बड़ा अच्छा लगता है गुलमर्ग देखना अच्छा लगता है मतलब आगे चले जाना बट हैव रिस्पांसिबिलिटीज पहले आपको उसके लिए काम करना है नेक्स्ट बात दूसरी बड़ी देख चलिए आशीष सचिन प्रिया प्रेम उज्जवल अपराजिता केडी केएम अरविंद काजल कृष्णा वेरी गुड मॉर्निंग चलिए प्रिंस महाराज युगांडा के महाराजों को प्रणाम है कौशिकपुर कैसा है कौशिकपुर कश्मीर के अंदर तापमान चलिए काजल दीप्ति सौरभ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं एंड ये सबसे फर्स्ट न्यूज़ ये देखिए इसको कुछ कहना चाहता है आपसे सब कहां है क्वेश्चन इसको जो है पैराग्राफ कर रहा है कि थर्ड लॉन्च पैड जो
किलोमीटर। इसकी लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी? बोलो। लखनऊ, वो प्रेम, आंध्र प्रशांत, प्रदेश। सुधांशु, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ तुमने चाय वाला लेके बैठी है क्लास में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री हरिकोटा चाय की बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि इसरो जो है, कहाँ जाने क्वेश्चन इसरो जो है वो प्लान आउट कर रहा है कि थर्ड लॉन्च पैड जो है इसको ओपन किया जाएगा और इसकी लोकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? बताइए। इसकी लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगी? बोलो। लखनऊ, प्रेम, प्रशांत, सुधांशु, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जहाँ तुमने चाय वाला लेके बैठी है क्लास में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री हरिकोटा चाय की बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि इसरो जो है यहाँ पर डायरेक्ट स्पेस एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो एक बार बनता है, 3 कॉर्पस बनता है। ये कब 1969 का ईयर था। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? बैंगलोर के अंदर। बैंगलोर के अंदर कर्नाटक में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलता है। और इसके जो टाइम कौन जाएंगे? ये हो जाएंगे वी नारायण जी। कौन जाएंगे? वी नारायण जी। ठीक है। अब ये जो इनका लॉन्चिंग पैड है, मतलब जहाँ से ये सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं, अगर हम लॉन्चिंग पैड की बात करें तो लॉन्चिंग पैड आपको मिलेगा कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। कहाँ आपको मिलेगा? श्रीहरिकोटा में मिलता है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ये है इनका एक लौता लॉन्चिंग पैड। ओके, हाँ रविराज बिल्कुल सही। अब ये जो यहाँ इनका लॉन्चिंग पैड है, इसके अलावा बोला गया था कि ये लॉन्चिंग पैड जो है वो हम तमिलनाडु के अंदर भी डेवलप करेंगे, बट अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है, मतलब ये पूरा नहीं हुआ है। तो ये कहाँ पे बनाने की बात हुई थी? बताएगा कोई? कुलारी? हाँ बताओ। कुलाशे? बट अभी इसके कोटा में। कहाँ आपको मिलेगा? श्रीहरिकोटा में मिलता है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ये है इनका एक लौता लॉन्चिंग पैड। ओके, हाँ रविराज बिल्कुल सही। अब ये जो यहाँ इनका लॉन्चिंग पैड है, इसके अलावा बोला गया था कि एक लॉन्चिंग पैड जो है वो हम तमिलनाडु के अंदर भी डेवलप करेंगे, बट अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है, मतलब ये प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये कहाँ पे बनाने की बात हुई थी? बताएगा कोई? कुलारी? हाँ बताओ। कुलाशे? पटिना? उजाला है? कुलाशे? हाँ कुछ ऐसा नाम है, कभी तुमको पढ़ाया था ना, पढ़ाया होगा, आपको नहीं याद है। पटिना ये दूसरी जगह है जहाँ पे लॉन्चिंग पैड को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अब बोला गया है, बोला क्या गया, मतलब कंफर्मेशन आया है कि इसको क्या करेगा, अपना तीसरा लॉन्चिंग पैड जो है उसको डेवलप करेगा। तीसरा लॉन्चिंग पैड जो है उसको डेवलप किया जाएगा। ये कहाँ आएगा? ये आएगा श्रीहरिकोटा के अंदर। पहला कहाँ है? पहला श्रीहरिकोटा में। दूसरा कहाँ है? दूसरा है तमिलनाडु के अंदर। जीतू वाई सेजल छत्तीसगढ़ राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे पहला श्रीहरिकोटा में है, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा भी कहाँ ओपन होने जा रहा है? तो तीसरा भी आपका श्रीहरिकोटा के अंदर ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ओपन तो हो जाएगा, बट हमें जरूरत क्या पड़ रही है कि हम यहाँ पे इतना एक और जो लॉन्चिंग पैड है उसको ओपन करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अभी आपने देखा होगा एलवीएम रॉकेट की सहायता से इंडिया ने 24 दिसंबर को लॉन्च किया था क्या? ब्लू बर्ड। याद है? ब्लू बर्ड को लॉन्च किया था और इसको लॉन्च करने के बाद में इसरो ने इतिहास रचा था सबसे हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करने का। हेवी सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। चलो बढ़िया बात है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो हेवी वाला लॉन्च हो गया, लेकिन अगर देखा जाए जो नया वाला बनाया जाएगा, कहाँ जा रहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से करीबन 12,000 से लेकर 14,000 केजी तक की जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जा सके, इसके लिए हम नया सेंटर ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, यूजुअली आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हेवी सैटेलाइट्स नहीं होती हैं जो लॉन्च हुए हैं अभी श्रीहरिकोटा से या दूसरा वाला बनेगा वहां से, बट जो तीसरा बनाने की बात हुई है वो इसके लिए हम उसको लॉन्च करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। चलो बढ़िया बात है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो हेवी वाला लॉन्च हो गया, लेकिन अगर देखा जाए जो नया वाला बनाया जाएगा, कहाँ जा रहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से करीबन 12,000 से लेकर 14,000 केजी तक की जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जा सके, इसके लिए हम नया सेंटर ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, यूजुअली आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हेवी सैटेलाइट्स नहीं होती हैं जो लॉन्च हुए हैं अभी श्रीहरिकोटा से या दूसरा वाला बनेगा वहां से, बट जो तीसरा बनाने की बात हुई है वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि काफी ज्यादा वेट की जो सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च किया जा सके। और ये कहाँ आएगा? ये भी आएगा आपका श्रीहरिकोटा के अंदर। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ पे सबसे पहली बार श्रीहरिकोटा का इस्तेमाल किया कब गया था? बहुत सवाल आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट टाइम श्रीहरिकोटा का इस्तेमाल कब किया गया था? कब किया गया होगा? मुझसे क्या श्रीहरिकोटा जो है ना, ये क्या है? ये आइलैंड है। क्या है? ये आइलैंड है। इसके बीच में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे एक तरफ आंध्र प्रदेश होगा इंडिया और यहीं दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा? पूरी तरह देखने को मिलता है। ठीक है, यही आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा। इसकी पीरियड कहाँ मिलती है? चलेगा। ठीक है, पहली बार इसका इस्तेमाल कब किया गया था? ये पूछेगा। 1971 में किया गया था, जब यहाँ से रोहिणी नाम की सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो रोहिणी नाम की सैटेलाइट है उसको यहाँ से लॉन्च किया जाता है। फाइन, तो पहली बार 1971 में इसको इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अपने यहाँ पे लॉन्चिंग, अगर हम रॉकेट की बात करें तो एक तो देखो अपने यहाँ पे पीएसएलवी है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा यहाँ पे है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तीसरा यहाँ पे है एलवीएम मार्क 3 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे कौन सा? एलवीएम मार्क 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आपको यहाँ पर अपने यहाँ देखने को मिलते हैं। आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में तीन तीन लॉन्चिंग पैड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रोहिणी अब तो मैंने बता ही दिया, अब क्या रोहिणी बता रहे हो। चलो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हेवी वेट से लॉन्च किया जाएगा। अगर हम करें रॉसकॉस तो ये इसकी है, ये है रशिया की। उसके बाद में आता है जेक्सा, जेक्सा किसकी हो जाएगी? जेक्सा है जापान की। उसके बाद में सीएसए, ये किसकी होगी? ये हो जाएगी कनाडा की। उसके बाद में ईएसए, ये हो जाएगी यूरोप की। इसकी यूरोप की। ओके, तो इनको एटलीस्ट आप ध्यान रखना कि कौन सी स्पेस एजेंसी कहाँ की है। ठीक है, स्पोर्ट है तो सही में शाखा पढ़ना। चलो आगे आगे न्यूज़ नंबर 2, हाथ मिला है। और तुम सोचो जब भी हाथ मिलाने की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो आते ही आता है। इस न्यूज़ को पूरा शिद्दत से सुनिएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि कंटेंट में पुराना है। ठीक है, चलिए सवाल कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कौन सी कंट्री है जिन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर को साइन करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुड मॉर्निंग जब क्लैशेस हो रहे थे, क्लैशेस को रोकने के लिए, तो ये कंट्रीज कौन सी हो जाएंगी? ये कंट्री है थाईलैंड एंड कंबोडिया। चाहता नहीं कहा है इसके पीछे भी मेरे ही हाथ है। कम से कम 2025 में ना सही 2026 में तो उसको नोबेल पीस अवार्ड दिख ही देना है ना। चलिए आगे बात करें, कहानी क्या है? देखिए, हम थाईलैंड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है कंबोडिया। इनके बीच में लड़ाई चली आ रही है। लड़ाई किस चीज को लेकर? एक लैंड को लेकर है जहाँ पे क्या बना हुआ है? जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एवर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? एवर टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर आपको देखने को मिलता है जो कि भोलेनाथ को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसका नाम है आपको बताया क्या नाम है इसका? प्रिय विहार। क्या नाम था? प्रिय विहार इसका नाम था। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है? इसी को लेकर विवाद आपको देखने को मिलता है। चलो मॉर्निंग क्या कराना स्टार्ट ईयरली पीरियड डाल दीजिए मैम, इतना मारे जाओगे ना टंडन, अब तो गुल हो जाओगे। क्या नाम ईयरली पीरियड डाल दीजिए बेटा, 2024 की भी पढ़िए 2025 की भी पढ़िए। अब बताओ मैं खत्म बोलिए बस इतना लास्ट ऑप्शन बचा है। कैलेंडर की पीरियड के बारे में, गैलेंडर की पीरियड के बारे में मुझे काफी बोला क्योंकि वो मैं ही शेयर करती हूँ। इसका नाम है आपको बताया था क्या नाम था इसका? प्रिय विहार। क्या नाम था? प्रिय विहार इसका नाम था। ठीक है, तो इसी को लेके क्या था? इसी को लेके बात के साथ ही साथ में मैं पूरे जाओगे कायदे से नाम ले लो। चलिए तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस जगह पर लेके चल रहा था विवाद और विवाद के साथ ही साथ में आपने देखा हो तो थाईलैंड ने क्या किया था? थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक किया था। क्या किया था? एयर स्ट्राइक किया था किसके ऊपर? कंबोडिया के ऊपर। फिर क्या बोला देखो यार इसको शांत हो जाओ वरना फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि मंदिर है ना तो किसको डेडिकेटेड है? भोलेनाथ को डेडिकेटेड था है ना, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे सीज फायर जो है उसको साइन किया जा रहा है। सीज फायर मतलब इस लड़ाई को रोका जा रहा है। किसी के बीच में साइन हो रही है तो थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में इसको साइन किया जाएगा। ये जो लड़ाई है ना, ये एक्चुअली में आजकल की लड़ाई नहीं है। ये बात है 1907 की, जब यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन आपको देखने को मिलती है और जो लाइन ड्रॉ होती है ये एग्रीमेंट के थ्रू ड्रॉ की जाती है और ये एग्रीमेंट का अगर हम नाम देखें तो नाम लिख लीजिएगा, जो नए बच्चे को नाम जरूर लिखेंगे, फ्रैंको सेमेसी ट्रीटी। क्या नाम है? फ्रैंको सेमेसी ट्रीटी। ओके, ये ट्रीटी आपको देखने को मिलती है। फाइन, अच्छा अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मंदिर है या फिर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स किसने बनवाया था? तो इसको यशो वर्मन के द्वारा, यशो वर्मन के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया था। सूर्य वर्मन के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है एंड सूर्य वर्मन के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है। तो ये मंदिर भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसको यूनेस्को की सूची के अंदर रखा गया है। यूनेस्को के बाद है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इसको रखा गया है 2008 में। ये मंदिर कब का बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है 9th सेंचुरी का। कब का बना हुआ है? 9th सेंचुरी का। अब सीज फायर हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तो सीज फायर कराने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? तो डोनाल्ड 9th सेंचुरी का। कब का बना हुआ है? 9th सेंचुरी का। अब सीज फायर हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तो सीज फायर कराने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने कहा है कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है जो मैं रुकवा रहा हूँ। अब वो भागे थाईलैंड में कंबोडिया के, है ना? तो डोनाल्ड ट्रंप चाचा का कहना ये है कि ये आखिरी ऐसी लड़ाई है जो मैं रुकवाने जा रहा हूँ और सच में देखा जाए तो यूएन जो रियल यूएन है वो
जैसी लाइफ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने कहा है कि जो यूएन है इसको बनाया गया था कि वर्ल्ड के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयों को रोका जा सके। सिंपल सी बात है ताकि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर ना हो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि अगर एक्चुअली यूएन देखा जाए, एक्चुअली यूएन नहीं है, यूएसए है। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर है डोनाल्ड ट्रंप और ये सबके अंदर क्या कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लुभा रहे हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला कि भाई देखो जो लास्ट वाली लड़ाई मैंने लुभाई वो लड़ाई तो 2022 से चल रही थी, कोई नहीं रुका पा रहा था। कहा कि ये कौन सी वाली लड़ाई थी? तो उन्होंने बोला रशिया और यूक्रेन वाली लड़ाई थी। और कल तक अगर आप आर्टिकल्स वगैरह देखो तो कल ही आर्टिकल निकला था कि यूक्रेन ने अपनी तरफ से बहुत सारे ड्रोन भेजे हुए डोनाल्ड क्या नाम है पुतिन का, जहाँ पे हाउस बना हुआ है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। पता नहीं कौन सी लड़ाई रुकवाते हैं, कौन सी लड़ाई शुरू हो जाती है, ये सब नहीं खत्म हो पा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि 8 लड़ाइयाँ हैं जो इन्होंने रुकवा दी है। चलो ठीक है, जो इन्होंने रुकवा दी है। चलो ठीक है, क्या कह सकते हैं इनको, है ना? क्या नहीं कह सकते हो तुम इनको? चलिए तो यहाँ पे लड़ाई है, लड़ाई यहाँ पर जल्दी से इसको बोला है हमने इसको रुकवा दिया, कौन रुकवा रहा है इसको? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ अंकोर वाट टेम्पल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो ज्वालामुखी इरप्ट हो गया, वोल्केनो इरप्ट हुआ है। सवाल कहाँ जाए? माउंट इतना जो है अभी हाल ही में इरप्ट हो गया है क्योंकि एक्टिव वोल्केनो है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है इसकी लोकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये कहाँ है? इटली के अंदर आपको मिलेगा। क्या नाम है इसका? माउंट इतना, है ना? इतना ये कहाँ पर है? सिसिली आइलैंड के ऊपर, सिसिली आइलैंड के ऊपर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। सिसिली आइलैंड किसका पार्ट है? तो ये इटली का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यूरोप के अंदर देखें तो यूरोप के अंदर ये एक काफी इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनो आपको देखने को मिलता है। इतना क्या है यूरोप के अंदर एक्टिव वोल्केनो है, यूरोप के अंदर एक्टिव वोल्केनो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या नाम है इतना है, यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलता है। ठीक है, इसको यूनेस्को की सूची के अंदर भी रखा गया है। ये यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है 2013 में इसको इसके अंदर रखा गया है। कब आएगा? 2013 में आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। कोई भी ज्वालामुखी होता है आगे को बढ़ता है, आगे को एक्टिव होता है। तो मैंने आपको जितने बच्चों का एग्जाम है विश वेरी गुड लक। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब तक प्लेट्स आपस में नहीं टकराएंगी तब तक कोई भी ज्वालामुखी इरप्ट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे जिन प्लेट्स का आपस में टकराव होता है यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको किसकी मिलेगी? एक तरफ होगी अफ्रीकन प्लेट, एक तरफ कौन सी होगी? एक तरफ होगी अफ्रीकन प्लेट, दूसरी तरफ कौन सी हो जाएगी? दूसरी तरफ होगी यूरेशियन प्लेट, दूसरी तरफ कौन सी होगी? दूसरी तरफ होगी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के कोलाइड करने की वजह से, इन दोनों के टकराव के कारण क्या हुआ है? ये ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है। एक तरफ टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको किसकी मिलेगी? एक तरफ होगी अफ्रीकन प्लेट, एक तरफ कौन सी होगी? एक तरफ होगी अफ्रीकन प्लेट, दूसरी तरफ कौन सी हो जाएगी? दूसरी तरफ होगी यूरेशियन प्लेट, दूसरी तरफ कौन सी होगी? दूसरी तरफ होगी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के कोलाइड करने की वजह से, इन दोनों के टकराव के कारण क्या हुआ है? ये ज्वालामुखी इरप्ट हुआ है। ठीक है, यूरोप का अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव है एंड यूरोप का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो भी यही है। यूरोप का जो सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है, लार्जेस्ट वोल्केनो जो है वो भी आपको यही देखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में क्या हो गया? इरप्ट हो गया। चलो ठीक है, ये जो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको ज्वालामुखी देखने को मिलता है, अगर हम इसके पानी के हिसाब से इसकी लोकेशन देखें, देखो मैंने मार्क लगाया है शायद, ये दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ कोई दिखाई दे रहा होगा, दिखना यहाँ पे सरीना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपने पढ़ा होगा नेपोलियन का टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा। अब ट्रम्प चाचा ये ट्रम्प चाचा कैसे एनीथिंग, वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ट्रम्प है आपको क्लास में आता है कहता है मेरा कमेंट दिखा तो वो कुछ भी कह सकता है। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प चाचा वो कुछ भी कह सकते हैं। जब कमेंट कर रहे हो लिख ही रहा हूँ, कैसे बातें करते हो। चलो ये सरीना और सरीना के जस्ट बगल में देखोगे यहाँ पे आपको सिसिली आइलैंड दिखाई दे रहा है। और अगर हम वाटर की बात करें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट इतना जो है ये कौन सी वाटर बॉडी पे है, तो कौन सी वाटर बॉडी हो जाएगी? भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? चलिए कपल से लाइक को ये हो गया इसके बारे में माउंट इतना के बारे में। देखिए अगर कोई भी ज्वालामुखी है अगर कोई इरप्ट होता है तो इसमें क्या है, ये होता है क्या होता है, इवेंट होता है, पाइप होता है। यहाँ पर ये जो रॉक्स है जो चट्टानें एक्टिव हो जाती है तो यहाँ पे मेल्टेड फॉर्म में क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैग्मा। ये फॉर्म में होता है जो कि मॉल्टेन फॉर्म में होता है। कैसा होता है? मॉल्टेन फॉर्म में, ना कि पूरी